we need to understand that now for Pakistan, the tax is really the cost of civilization. If we will not pay taxes, we will not be able to ensure security for masses. You will have a serious problem in anarchy. Now, this choice is yours, or choice is ours, that we should come up sometime and say, now as a nation, we have to start paying taxes. Yes, and I totally believe that both sides are equally responsible. If we, Saqib Sahab, myself, Qazi Sahab, we sit on the advisory council, they hear to us. And what we say, they hear to institute. But still, if the result is zero, then it means that there is something has to be done. So my view is that tax rate is a very reasonable issue. Tax rate need to be reduced. But I think for 1 or 2 years, our focus should be really, I would say, really broad-basing the tax. And I just ask a common man, how many bank accounts we have got? How many bank accounts? We may have bank accounts of, I think, at least 10 times of the NTN holders. Why? You know, why every NTN account, bank account, or at least a business account? So let's forget a non-business account. Why every business account? Why every shop is not an NTN holder? I can't believe it. So unless we go for all out for documentation and automation, I think there is no answer. I don't foresee any answer. जब तक हम ये चीज़ क्लियर नहीं करते हैं, कोई आंसर नहीं है. But I totally believe कि we are in a trap. Either we reduce the rate, we can't reduce the rate because our net is lower. We can't increase the rate, so we are in a trap, and that trap has to be broken. And I think, very frankly, I think Saqib Sahab is much knowledgeable than me. I think we don't have much space for future, I think. But what I'm saying, space for future means that if we go on for this manner, that we will have, again, always be stuck up by these issues which we are facing. So I think this is a very important matter. Mr. Saqib, you said that your job is to explain to the IMF people, the World Bank people, about the context in which Pakistan has been taking various measures. But it seems that, it's hitting the deaf ears, because IMF has been consistently pressurizing Pakistan to implement VAT as soon as possible. I believe the announced date is effective 1st July 2010. So how practical do you think this promise is, keeping in view the recent NFC award signed by all the provinces? Do you think we'll be able to implement VAT by 1st July 2010? I think I'll defer to the judgment of Mr. Asrar Rauf on that, because he's in the front lines in trying to implement it. But let me just say two things. Let me repeat one thing which I said earlier, which is that the VAT is not an IMF issue. Just to take on what Shahbaz Zaidi Sahab said, I think I said this last year, I almost exactly remember the words. When we were fighting the Taliban last year, the Taliban at this time when I was here last year, the Taliban were roughly about 60 miles from Islamabad, and we were all worried. And even then I think I said here that जो पाकिस्तान की बका की जंग है वो स्वात में नहीं लड़ी जा रही, वो actually tax side पे लड़ी जा रही है. Really, because you can overcome the problem of militancy in maybe 2 years, 3 years, inshallah, definitely, in some set time frame, 5 years, maybe 7 years or whatever. But you cannot overcome the viability of Pakistan as a functioning country and economy is totally at stake. I fully agree with Shahbaz Zaidi Sahab. And until we frame it this way, and this is what Shaukat Tareen Sahab was trying to do, until we frame this day in, day out with groups like this, in the parliament, subcommittees, wherever, we will not understand that, VAT is not a dictated issue. VAT is one of the elements that Pakistan has to implement, IMF or no IMF. So I'm fully committed to, to that. If we do not broaden the tax base, we really will not have a functioning economy and a functioning country in a couple of years. You said in your presentation that we are at the moment plugged out of the global supply chain in terms of value-added goods. And you also explained the reasons why. Fighting against, war against terrorism being one of them. How do you think we can get ourselves plugged in? Because that's the only point where we can increase our productivity. Even if we have a good productivity rate and we don't have the open market,
how do you think we can, improvise our economy in terms of GDP and of course tax to GDP to follow? That's, I think, a very good question. For the first time, we've actually taken this up diplomatically in a very serious manner. I can tell you that when the Pakistan team went to Washington for the Pak-US strategic dialogue, there were three basic planks, or three basic elements of our strategy, or what we'll talk to the US about. And one of them, right at the top, was market access. And at the same time, before the team left around February 17th in Islamabad, European Union delegation was there, high level, and prior to that there were high level talks in Brussels, exactly on a single point agenda, GSP plus for Pakistan. So we've elevated it, we've done our homework, we've brought it to the attention of people how we are being affected, and these are long run effects. Whether they make headway or not, to be honest, ये अब दूसरे साइड की सोच और समझ के ऊपर है, whether they really want to help Pakistan or not. Do you think the government has ever considered exporting services out of Pakistan? Because this is one of our recommendations. If Mr. Shabir also may want to highlight on that. Has the government ever considered exporting services, especially keeping in view that the 60% of the population is around 30? Let me just, before I talk about the services, let me clarify one thing, that unfortunately on the VAT issue, a lot of amateurish views and जज्बाती गुफ्तगू अखबार में आ रही है, और एज इंस्टीट्यूट फोरम वी शुड बी वेरी क्लियर, इसमें वेट में और एनएफसी अवार्ड में कोई क्लैश मुझे नजर नहीं आता. लेट अस बी क्लैरिफाई व्हाट वी आर सेइंग. देखिए, पाकिस्तान की आइन के 47 ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट, टैक्सेशन ऑफ गुड्स जो है वो फेडरल का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज प्रोविंस का सब्जेक्ट है, और जो वेट का लॉ आपके सामने आज है इसमें 4 सूबाई वेट लॉ हैं और एक फेडरल वेट लॉ है, और चारों सूबों के वेट के सूबों ने अपना राइट टू कलेक्ट वेट ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया हुआ है फेडरेशन के साथ. दिस इज व्हाट द लीगल पोजीशन इज. एनएफसी अवार्ड में सिंध ने ये कहा है कि दे मे कंसिडर कलेक्टिंग द वेट ऑन सर्विसेज देमसेल्फ. तो ये वेट के मैकेनिज्म को में कोई क्लैश नहीं है, ये एक अभी एडजस्टमेंट होनी है कि अगर सर्विसेज की वेट कलेक्शन सिंध के पास रहती है तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा इन द वेट कलेक्शन. मगर जो वेट के बुनियादी इशू हैं, रिटेल स्टेट पे जाना, एक्सपोर्ट का वेट, एक्सपोर्ट लोकल रिटेल ट्रेड वाला, उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है. तो हम बहुत सी चीज़ों को मिक्सचर कर रहे हैं. तो एनएफसी अवार्ड में जो बात है वेट की, वो चीज़ वो नहीं है जो वेट की. तब आपका तो इसलिए हमें एज अकाउंटेंट भी वेरी वेरी क्लियर कि जो एनएफसी अवार्ड में उनका राइट है वो वेट कलेक्ट कर सकते हैं. उनके अगर वो कहेंगे तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगी, और अगर वो उस मैकेनिज्म को एग्री हो जाएगा, वो मैकेनिज्म डिवॉल्व हो जाएगा. वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. मगर जो मैं बार बार आपको लोगों को कहता हूँ कि वेट ऑन सर्विसेज का इशू नहीं है, हमारी वेट की कलेक्शन ऑन गुड्स में सीरियस इशूज हैं. वो हमें कैटर करने. जो हमारे 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं वो आज जीरो रेटेड है. उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल का पूरा लोकल सेक्टर जीरो रेट है. तो हम लोग जो 18 करोड़ आदमी कपड़ा पहन रहे हैं, ये कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं. लेकिन ये वो चीज़ ट्रेजिडीज़ हैं जो हम रियलाइज नहीं करते. और अभी हम कोई बात करेंगे तो एकदम एक इशू खड़ा हो जाएगा जी कि एक्सपोर्ट ये हो जाएगी और वो हो जाएगी और ये. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें कोई रास्ता दिखाना है कि आगे चले. कमिंग बैक टू द सर्विसेज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आई थिंक जो वो बात रेज की थी हैदर पटेल ने, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो एग्जेम्प्ट है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है इन अ रियल सेंस. उसकी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है कि अगर मैं सर्विस बाहर जाकर रेंडर करता हूं तो वो एग्जेम्प्ट है, या उसका रेट ऑफ टैक्स 1% है. अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर एडवाइस देकर आता हूँ दुबई में, वहाँ बिल कर लेता हूँ, वो एग्जेम्प्ट है. मगर अगर पाकिस्तान बैठ के मैं एक अच्छी कमाई और बिल कर लेता हूँ इंग्लैंड से, वो टैक्सेबल है. ये एनोमली है. अगर मुझे फिजिकली बाहर जाना पड़ता है एडवाइस देने के लिए तो वो टैक्सेबल, क्योंकि उसमें लिखा है सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान. ये गलती है, क्योंकि आप जो बंदा पाकिस्तान में गुड्स बना रहा है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता है, उसको आप बोलते हैं कि आप एग्जेम्प्ट हैं, आप 1% टैक्स से फाइनल हो जाते हैं. और मैं यहाँ बैठ कर एडवाइस देता हूँ, वहाँ से मुझे $50,000 का बिल आ जाता है, वो कहते हैं नहीं साहब ये एग्जेम्प्ट नहीं है, इसलिए कि सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान. तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हमें इक्वेट करना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ. और जो भी सर्विसेज की प्रोसीड बाहर से आ रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वही होनी चाहिए
जो गुड्स की है। Exactly. और ये चीज़